Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Michelle, the moderator for this conference call. Welcome to the Investor and Analyst Conference Call of Ice Make Refrigeration Limited, hosted by Ariana Matasco, Emerging Company Reputation Management and Communication Service Provider, to discuss the financial results for Q4 FY22 and year-ended 31st March 2022. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode, and later we will conduct a question and answer session. At that time, if you have a question, please press star and 1 on your touch-tone phone. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand over the conference to Mr. Aryan Rana from Ariana Matasco. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Michelle. Good evening to all of you, and thanks for joining this conference of Ice Make Refrigeration Limited to present and discuss the financial results for the quarter and full year ended 31st March 2022. Ice Make is a leading supplier of innovative cooling solutions and manufacturer of 50 plus refrigeration equipments in India. The company has been successfully satisfying the needs of its customers from production to after-sales service for the last 30 years. The company is engaged in the business of providing customized cooling solutions to a diverse set of clients across a wide range of industries by manufacturing and supply high-quality refrigeration products and equipment. We have mailed the results to you. I hope you have received the same, and we have also uploaded this on our website and the stock exchange. Before we proceed to the call, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future results, performance, or achievements from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To discuss the results and address the queries of investors, we have with us the management represented by Mr. Chandrakant P. Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy, Mr. Ankit Patel, CFO, and the key management from Ice Make Refrigeration Limited. We will start the call with CMD's remarks, brief overview of the year gone past, financial highlights, business updates, and then we will open the floor over to Q&A session. With that said, I will now hand over the call to Mr. Patel. Over to you, sir. Thank you so much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I, Chandrakant Patel, welcome you all at Investor and Analyst Conference Call to discuss Q4 22 and financial year 22 financial results and road ahead. I am very pleased to announce that with the positive change in the environment for business and strong growth in our various verticals, as well as growth in e-commerce export business, our revenue has crossed rupees 200 crore for financial year 22. I would like to inform you that despite increase in raw material price, we managed the growth due to high demand. We had also revised the price list 2 times this year and passed on to the customer. We believe that we will manage the growth journey in coming years and overcome from all odds. We have also launched our solar cold room with a new brand name Solo Perifresh. Recently, we received good numbers of order of solar cold room in recent past. We have strong pending order book on hand of rupees 50 crore. Now, our CFO will provide detail of financial performance, and our Vice President Strategy will provide
business update, and future role ahead. Once again, thank you for joining the call. Thank you. Good afternoon to all of you. The company is able to put strong financial results despite pressure like raw material price volatility, transport price hike, where the company took steps like increase in selling price in couple of times in last financial year 21-22. The overall business not only recovered the lost ground due to COVID-related issues, but also took a leap forward with 50% plus growth in top line and 100% in net profit for FY 2022. We are able to generate healthy cash flow due to various cost realization, capital preservation, and prudent working capital management measures. The measures enable the company to close financial year 2021-22 with strong balance sheet, healthy liquidity, and cash flows. I am just giving glimpse of quarter-ended consolidated financial performance for quarter 4 of financial year 22. During Q4 of FY22, the revenue from operations saw a robust 43% year-on-year growth compared to quarter 3 of FY22. Revenue was up by 57%. Consolidated revenue in quarter 4 of FY22 stood at 76.90 crore compared to 53.80 crore in corresponding Q4 of FY21. Net profit during Q4 of FY22 stood at 5.53 crore as against 2.98 crore in Q4 of FY21, registering strong 86% year-on-year growth. Moreover, compared to Q3 of FY22, net profit made over threefold gain. There are some key highlights of consolidated full financial year performance. Net profit registered a strong 103% growth on year-on-year basis and led by sharp jump in revenue. In fiscal year 22, the company posted a strong 53% year-on-year growth in revenue to rupees 206 crore as against 134.6 crore revenue posted in fiscal year 2020-21. Increase in input costs and commodity prices led to jump in raw material costs. Efforts to control material costs and other fixed costs are done, resulting in maintaining good profitability. During fiscal year 21-22, cost of material consumption ratio was up by 4.36% on year-on-year basis. Despite input price pressure, the company maintained a good profitability and the EBITDA grew by 31.6% on year-on-year basis to 15.2 crore. EBITDA margin in this period stood at 7.3% compared to 8.5% in FY 2021. Financial costs fell by 9% on year-on-year basis. It stood at 1.73 crore. The company is also considering to improve return on capital employed in its overall profitability. Recently, company has inaugurated a Vamas plant, which will result in reduction of rent expense approximately around 35 lakhs. The board recommended a final dividend of rupees 1.2, that is 12% for equity share of rupees 10 each for financial year 21-22. The current pending order book and recent order booking in new financial year are very healthy. We are sanguine to post good numbers in upcoming quarters also. Thank you. Okay, good afternoon to all. Let me brief you regarding our whatever the remarkable growth we have received in FY22. I would like to just brief you regarding the zone-wise contribution of the revenue. So where we are based at the West and we are very much the biggest contributor of the our business is West zone. It is almost 60%. We have got the business from East zone, that is 11.3%. In Southern zone it is 10.35%. North it is 7.16%.
And whatever the national dealers are there, we are having OEM national base working, that is around 4.4%. And we have our contributed export business is around 6%. So far as vertical is concerned, cold room is our highest revenue vertical, that is almost more than 50%. And the second one is the commercial refrigeration. It contributes about 22.6%. Third one is the ammonia refrigeration, that it has contributed 12.45%. Then our refrigeration business is also contributed 9.83%. And our industrial refrigeration vertical, that is it has been contributed 5%. In FY22, we are having very good business for the current year also. But let me highlight some key highlights of the FY22. That we have obtained an export order from the solar cold room for the African country. We have also expanded our footprints by delivering a complete milk processing plant with 1,000 liter per hour capacity to a new client in Kenya. Some companies also expanding its customer with international and domestic markets. We have specially designed and installed over 60 freezers and chillers of cold room for a 10-minute delivery startup company, that is Kirana Cart. It is with Jepto brand. They have outlets across India in different locations. Company has also executed multi-purpose dairy processing plant at Kota, Rajasthan for milk, paneer and curd, buttermilk and a milk handling capacity of 30,000 liters. As our MD says, we have recently launched our innovative solar-powered cold storage brand under the name Solo Perifresh, that is the power of tomorrow. Solo Perifresh was to increase the bargaining power of the farmers by saying perishable products from getting spoiled, powered by green technology. The eco-friendly system will enable our Annadatta farmers to earn more income, prevent spoilage of their valuable produce, maintain quality, freshness, increase shelf-life of temperature from produce, and contribute in reducing carbon emissions and global warming. Solo Perifresh is a long-term solution to the farmers' lack of cold storage and low-income problem. By adopting these powerful solutions, they can easily increase their power of tomorrow, which these branded standalone and portable storage equipment offer. We are also planning to launch our other products also in new brand. We are also looking forward for the business expansion, and we are searching for the suitable location, as well as we are exploring one of the products which relevant to our refrigeration industries, and it may be with a capex of almost 20 to 35 crore, and we will be definitely inform and announce whenever we are sure. Within short time, within the next quarter, we will be able to give you some more highlights. Apart from that, we are also looking for geographical expansion of the current business because the transportation cost is a major. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइनवर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे. Hello. Sir Nikhil, please go ahead. Yeah. Apart from that, we are also looking for the geographical expansion at the national level to better our business. That's all. Thank you. Hello. Can we open the Q&A session now? Yes. Yeah. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touch-tone phone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles.
The first question is from the line of Sanjay Shah from Broking Limited. Please go ahead. Yeah, good evening, gentlemen. Congratulations on good set of numbers and thanks for opportunity. So my question was regarding more better understanding about our company. So pardon me if some immature question comes across. So my question first was regarding our presence in this cooling solution since last several decades, and we have reached to this remarkable milestone. Since we are leading solution provider, can you highlight how you rate our company among other and competitors in India? And number two, why our margins are our RMC to sale is so high, which is around 73-74%. Then what is the value addition we are doing for that equipment? हेलो आई थिंक अभी मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ कि मतलब जो भी हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट है दैट कम्स टू मे बी अराउंड 70 to 75%, राइट. एक्चुअली पिछले पास ट्रैक रिकॉर्ड में हम देखे 1920 से लेके अब तक का, तो मे बी अराउंड 68% to 70%. That is our raw material consumption ratio to sale, or GP would be more than 30% relatively. पर पिछले साल की बात करें या लास्ट ईयर में हम देखें तो रॉ मटेरियल कमोडिटी के प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल थी, और आई थिंक पास्ट हिस्ट्री में भी हम देखें तो मेटल के प्राइसेस जो हमारी प्राइम प्रोडक्ट है कि जिसमें मेटल हम यूज़ करते हैं और हमारे जो पर्क फॉर्म है उसके प्राइजेस मोर देन डबल हुए थे. तो हमने भी 2-1 बार प्राइस रिवीजन किया हुआ है, पर ये ऑर्डर बुकिंग में और ऑर्डर फाइनलाइजेशन में एक बार प्राइस कोट कर दिया और बुकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इमीडिएट पास ऑन होता नहीं है. एक आध क्वार्टर का या थोड़ा सा ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है, और इंडस्ट्री हैज़ अ होल ये इम्पैक्ट था. तो मुझे लगता है ओवर लॉन्ग टर्म हम मार्जिन को देखिए तो अराउंड 8-9% के EBITDA को हम मैच करें, वैसा हमारा प्लानिंग है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम अराउंड 20% के आसपास का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा प्राइम फोकस अभी टॉप लाइन इंक्रीज करना है. मार्जिन को हम उतना एग्रेसिवली फोकस नहीं कर रहे हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 25 to 30% का जो ग्रोथ है वो हम अचीव करेंगे विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने कहा 8-9% EBITDA और 20% समथिंग ROCE. 25% सेल्स ग्रोथ हर साल करेंगे, ये टारगेट है अपना एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर. 25 to 30% का ग्रोथ लाना, और अभी की जो डिमांड है और अभी हमारे जो 2 महीने भी गए हैं, हमें लगता है ये उतना डिफिकल्ट नहीं है. और मार्जिन भी मेंटेन कर पाएंगे 8% के ऊपर, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारा 2-3-4% का मार्जिन बिजनेस था, और फर्स्ट टाइम हम लोग ने 8% किया इन स्पाइट ऑफ हायर इन्फ्लेशनरी प्रेशर. तो आप यू आर श्योर कि हम लोग अभी 8 के ऊपर मेंटेन कर पाएंगे प्रॉफिट मार्जिन आगे जाके? EBITDA मार्जिन की हम ओवरऑल बात करें तो पिछले साल में जो हमारा EBITDA था वो मे बी अराउंड 10-12% के आसपास था, पर वो पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा कॉम्प्रेस हुआ था. पिछले साल में ही मेजरली मैं बोलूँ 2021 में वो कॉम्प्रेस हुआ था अराउंड 7.5% का. तो अभी इस साल में हमें लगता है कि वो 8% था, सॉरी, वो लगता है 8 to 9% हम मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ एक टर्न की सॉल्यूशन है और एमोनिया वर्टिकल है जिससे हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, 50 लाख से टिकट साइज ज़्यादा आती है. तो वो ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें एकदम ऐसा वाला हेल्दी मार्जिन रहेगा, पर उसमें हमारी जो फैक्ट्री की प्रीमाइसिस है, ऑपरेशनल एक्सपेंस, वो सब कम रहेंगे. तो बल्क वॉल्यूम वाला बिजनेस है उसमें, और मार्जिन उसमें कॉम्प्रेस रहेगा. मे बी अराउंड 10% का हम ग्रॉस मार्जिन उसमें कंसिडर कर सकते हैं. ऑपरेटिंग मार्जिन 10%. हाँ, 10% ऑपरेटिंग मार्जिन. और साथ में हमें लगता है ई-कॉमर्स सेक्टर ऐसा है जिससे हमारा ग्रोथ आगे आएगा, और ये एमोनिया सेक्टर है.
ये थोड़ा एलाबोरेट करेंगे क्या होता है अमोनिया रेफ्रिजरेशन जो आप बता रहे हैं वो? एक्चुअली अमोनिया आप जानते हैं बड़े डेयरी होते हैं, या तो हम लोग जैसे पहले होता था मल्टी स्टोरी कोल्ड स्टोरेज जिसमें पोटेटो स्टोरेज होता है या और कमोडिटी स्टोरेज होता है। अमोनिया एक टाइप का रेफ्रिजरेंट है, जैसा हम लोग फ्यूल में होता है पेट्रोल डीजल, वैसा आपके घर में या तो आपके एयर कंडीशन में जो रेफ्रिजरेंट है वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए एक अलग रेफ्रिजरेंट है जो हार्मफुल नहीं होता है। और एमोनिया रेफ्रिजरेंट है बड़े स्केल के प्रोजेक्ट के लिए, और एमोनिया यूज इसीलिए होता है क्योंकि वो नेचुरल गैस है। दूसरा एमोनिया का एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो अच्छा है। तो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट हम लोग पहले 3-4 साल से ही हमने एमोनिया वर्टिकल शुरू किया है। तो बड़े बड़े जो जॉब थे वो हम नहीं कर पाते थे, तो एमोनिया करने का यही रीजन है। और एमोनिया हम हेड करते हैं, लेकिन हम इनको ऐसा भी बोल सकते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट जिसमें आप ओपन होने चाहिए कि एमोनिया के साथ आप कर पाएंगे। तो बड़े एक बॉटलनेक था हमारे प्रोजेक्ट में, वो बॉटलनेक हटाने के लिए हमने एमोनिया इन्वॉल्व किया। यूजुअली हमारा प्रोडक्ट साइकिल टाइमलाइन कैसे होता है? हम ऑर्डर लेते हैं, एडवांस लेते हैं या नहीं लेते हैं तो लेते हैं तो कितना लेते हैं और कितने टाइम में डिलीवरी कर पाते हैं प्रोडक्ट? एक्चुअली प्रोडक्ट में वेरियस बास्केट है, आप भी जानते हैं। तो 3 वीक के पहले तो कोई प्रोडक्ट डिलीवरी होता नहीं है, 2-3 वीक मिनिमम है। और 8-9 वीक भी है, जैसा एमोनिया का प्रोजेक्ट है तो कोई 9 महीना भी प्रोजेक्ट चलता है। पेमेंट में ऐसा है कि हमारे जो 5 लाख से छोटे ऑर्डर है उसमें जनरल 50% एडवांस कंडीशन होता है प्राइवेट कस्टमर के लिए, लेकिन 30% एवरेज एडवांस होता है। शायद अभी भी हमारे पास 50 करोड़ के ऑन हैंड ऑर्डर के सामने एडवांस अमाउंट कितना है? अभी एडवांस अराउंड 14 करोड़ के आसपास। अभी 14 करोड़ एडवांस हमारे पास है आज की डेट में। तो एडवांस 30% एवरेज आप एडवांस बोल सकते हैं। राइट। तो सर अभी हम कौन सी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पे चलते हैं? क्योंकि लास्ट मैंने देखा हमने कोई बड़ा कैपेक्स नहीं किया है 2-3 साल में, तो अभी क्या करना चाहते हैं? हम कैसे ग्रो करेंगे यहाँ से आगे? एक्चुअली आप भी जानते हैं कोरोना के टाइम में सब लोग समय पास करना चाहते थे कि भाई ये टाइम खराब टाइम है, उसको पास कर दे और बिजनेस को स्टेबल रखे, मेंटेन करे। हम लोग ग्रोथ एक्सपांसन तो 2 साल पहले भी थे हमारे पास एक्सपांसन प्रोजेक्ट। हम अगले समय में एक्सपांसन जो 2 साल से हमने सोच के रखा था उसमें काम करेंगे। अगले 2-3 महीने के बाद हम बताएंगे आपको कि अनाउंस करेंगे हम कौन सी प्रोडक्ट के लिए करेंगे। हम करेंगे यही इंडस्ट्री, यही प्रोडक्ट के आसपास करेंगे। थोड़ा सा हमारा जियोग्राफिकल भी एक प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेके बिजनेस लिमिटेशन हो जाता है। एक डिस्टेंस के बाद आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते, तो वो फोकस भी है। और एक प्रोडक्ट भी हम लोग जोड़ेंगे और अच्छा एक्सपांशन करेंगे जो अब तक की हिस्ट्री में नहीं किया है उसका। अभी हम एक्सपोर्ट कितना % करते हैं और आगे कितना करने का हमारा प्लान है एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट जो पिछले साल का फिगर है हमारा 14.5 करोड़, उससे पहले के साल में हमने 6.5 करोड़ का किया था। तो एक्सपोर्ट हमने इस साल मोर देन डबल फोल्ड हमने किया हुआ है। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा लोग एक्सपोर्ट में और ट्रैवलिंग के थोड़े से रिस्ट्रिक्शन थे, पर अभी एक्सपोर्ट को भी हमने थोड़ा सा फोकस में रखा है। इस साल के लिए मे बी अराउंड 18-20 करोड़ के आसपास का हमने टारगेट रखा है। अभी हम यूटिलाइजेशन कितने पे चल रहे हैं? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 67% के आसपास की यूटिलाइजेशन अभी गिन सकते हैं। काफ़ी सवाल हैं मेरे पास, मैं क्यू में आता हूँ कुछ पूछना है तो। एंड थैंक यू फॉर विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी ऑल द क्वेश्चन आंसर्ड बाय यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1. The next question is from the line of Zaki Nasir. Please go ahead. Hello. Can you hear me? हाँ, yes, Zaki जी. Namaskar Chandrakant bhai, namaskar to the team of IceMake. Congratulations sir for the बहुत ही जो बढ़िया परफॉर्मेंस इन द लास्ट क्वार्टर एंड द फुल ईयर सर।
चंद्रकांत भाई, a question for you, sir. जैसा कि IceMake is like an emerging company in the from a small to a larger company. सर आपके दृष्टि में आप 2025 में IceMake को कैसा देखना चाहते हैं सर? दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है सर, जो आप ये एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, इसमें वुड यू वांट टू रेज फ्रेश फंड्स और इट विल बी फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स? थैंक यू सर. देखो, हम लोग 2025 में अगर कोई बड़ा कैपेक्स नहीं करेंगे तो हम लोग 400 करोड़ तक पहुंच सकते हैं. कैपेक्स करेंगे, जो प्लान है, अगर सब ठीक रहा तो 25 में ही 500 करोड़ पहुंच सकते हैं. और आपने जो बोला कि हमारा जो एक्सपांशन है उसमें फाइनेंस सोर्स क्या होगा, तो वो अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि ये कोर फाइनेंस सब्जेक्ट है. हम लोग हर एक ऑप्शन के लिए ओपन है. और देखेंगे, इंटरनल एक्रूवल बड़ा अमाउंट शायद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बैंक भी है, इक्विटी भी है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अभी जल्दी है क्योंकि उस सवाल के लिए. लेकिन एक्सपांशन करेंगे, ऑप्शन हमारे पास ओपन है सब. जी, पर अगर 2025 में 500 करोड़ रीच करना है सर, तो कितना कैपेक्स की जरूरत है सर उसमें? देखो, 2025 में 500 करोड़ के लिए कैपेक्स डिसाइड हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो प्रोजेक्ट है और उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उस हिसाब से हम लोगों ने मोटा मोटा सोच के रखा है. तो 25 करोड़ के आसपास का है. 5 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, तो 25 करोड़ लेके चल सकते हैं. जी, उतना तो आई थिंक इंटरनल अक्रूवल्स और टैक्स से ही हो जाएगा सर. और सर, ये आप जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, सोलर पेरीफ्रेश, इसका फील्ड मार्केट में कैसा है सर? बिकॉज प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है. थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं सर ये प्रोडक्ट के ऊपर? एक्चुअली सोलो पेरीफ्रेश जो है, हम लोगों ने एक रीब्रांड किया हुआ प्रोडक्ट है. अब तक हम लोग उसको सोलर कोल्ड रूम के नाम से इंट्रोड्यूस करते थे. सोलर कोल्ड रूम जनरली गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल और एनजीओ हमारे मेन बायर है, जहां टेंडर प्रोसेस से सेल होता है. पिछले 2-3 साल से ये प्रोडक्ट हमने बनाया था, लेकिन सही समय नहीं था. गवर्नमेंट भी ये इस एग्रीकल्चर के लिए एग्रेसिव फंडिंग नहीं था, तो काम टेंडर भी नहीं हो रहे थे. अभी बिजनेस अच्छा है, आगे भी लगता है, जो स्टेट और हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मूवमेंट है उसको देख के. लेकिन ये बिजनेस प्योर टेंडर है. आप जानते हैं गवर्नमेंट का काम करने का स्टाइल और स्पीड, तो वहाँ हमारे कंट्रोल में सब होता नहीं कि हम जैसा प्राइवेट बिजनेस में टारगेट करें कि हम 25 में 400 करोड़ 500 करोड़ पहुँचेंगे. ऐसा अप्रोक्सीमेट हमारे जो नियरेस्ट पीयर्स है वो सबका बोलना है कि करंट ईयर में अप्रोक्सीमेट 300 सोलर कोल्ड रूम की डिमांड आएगी, मतलब सप्लाई होगा. अब देखते हैं हम लोग कितना कर पाए. हम वैसे तो लीड प्लेयर है ही इस प्रोडक्ट में. जी सर, थैंक यू सर, एंड बेस्ट विशेस सर. मैं वापस क्यू में आ जाऊँ. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much. A reminder to all the participants, please press star and 1 to ask a question. You may press star and 1 to ask a question on your touch-tone phone. The next question is from the line of Dharmesh Solanki, an individual investor. Please go ahead. Hello everyone. Thank you Chandrakant ji and all the team for the great result and the great progress for the company. My question is regarding the export part. So I joined a bit late, so maybe I'm not sure whether that question is covered already or not. But the question is, like, right now, how many countries you are exporting, and in next 2-3 years, what is your plan to
export in how many countries? That is the question number one. Another question is, and this is maybe repeated question. What is the plan for the some big investor invest in the company, either an institute or any other investor? Those are the two questions. Thank you. पहले क्वेश्चन का मैं पहले बात करते हैं कि एक्सपोर्ट में हमारा अभी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और नेपाल में और सराउंडिंग कंट्रीज में रेगुलर एक्सपोर्ट होते हैं। यूएस में भी हमारा एक ओईएम है जिनके थ्रू रेगुलर एक्सपोर्ट अभी हमारा शुरू हुआ है। आई थिंक जो अभी प्रीवियस फाइनेंशियल 21-22 में हमने 14.5 करोड़ प्लस हमने एक्सपोर्ट किया हुआ था, उससे पिछले साल में अराउंड 6 करोड़ का एक्सपोर्ट था। इस साल में वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी अराउंड 18 to 20 करोड़ का एक्सपोर्ट हम जो नया साल है उसमें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट में दैट वी आर प्लानिंग के जो भी हमारा अभी एक्सपोर्ट में हम मार्केट को कैप्चर करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बार एक्सपोर्ट में हमारे मार्जिन जो भी डोमेस्टिक है उससे बहुत ज़्यादा हाई ना हो। डेफिनेटली एक्सपोर्ट में थोड़ा सा मार्जिन बेटर होता है, बट एक बार हमारा एक्सपोर्ट में थोड़ा सा रीच आ जाए और रेगुलर बिजनेस हमारा शुरू हो, उस फोकस की वजह से हमने उसको उतना एग्रेसिवली मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट नहीं किया है टैप करना। पर डेफिनेटली डोमेस्टिक से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था आई थिंक रिगार्डिंग लीडिंग को इन्वेस्टर का, राइट? काफ़ी सारे इंक्वायरीज और इन्वेस्टर हमारी कंपनी को ट्रैक करते हैं, रडार में रखते हैं। तो ये आके हमारा डिस्कशन भी हुआ है, बट उनका क्या स्ट्रेटेजी है और किस हिसाब से वो एंट्री करेंगे उसका हमें भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है। और हमने भी उनको वो जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगते हैं वो हम उनसे शेयर करते हैं, बट व्हाट दे आर थिंकिंग हम एग्जैक्टली अभी वी ऑल्सो डोंट नो। पर जिस हिसाब से कम्युनिकेशन होता है उस हिसाब से लगता है कि रडार में है, दे में टेक देयर कॉल। ओके सर, मुझे एक्चुअली ये जानना था कि आपने बताया कि नेपाल, यूएस में और ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप मुझे नंबर्स में बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 10 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं और नेक्स्ट 1-2 साल में बाकी के जो कंट्रीज है जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं या 2 साल 3 साल में, तो हमारा प्लान है कि 20 या 25 कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है वो सब के लिए हमें जो भी प्रोसेस करना पड़ेगा वो सब करेंगे। एक्चुअली अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट अभी 20 से 22 कंट्रीज में होता है और कुछ टारगेट कंट्री की बात करें तो जहाँ पोटेंशियल है, अभी लगता है कि अफ्रीकन और बेसिकली ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और अदर कंट्रीज में काफ़ी पोटेंशियल है और जहाँ मार्केट ओपन है तो हम वहीं कोशिश करेंगे। हम ऐसा कोई कंट्री वाइज टारगेट नहीं बनाते, मगर जहाँ पोटेंशियल रखता है या सो पोटेंशियल वाइज कंट्री को हम टारगेट करेंगे। और पिछले 2-3 साल से जो कोरोना की वजह से जो मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन था बोथ द वे, तो कई सारे क्लाइंट इंटरेस्टेड है या इंडिया आने के लिए और हमारे साथ आगे बात करने के लिए। थोड़े ओईएम भी है जो इंटरेस्ट लगते हैं हमारी प्रोडक्ट के साथ कुछ टाइप करने का, तो हमें लगता है कि हम उसी दिशा में काम करेंगे। ओके सो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मतलब आई एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट 2 साल में और 5-10 कंट्री या ऐड हो जाए, राइट, एक्सपोर्ट में? या वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग। ओके, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Sanjay Shah from Broking Limited. Please go ahead. Yeah, thank you once again. मेरा सवाल था, हम वारंटी गारंटी देते हैं हमारे प्रोडक्ट पे और हमें मेंटेनेंस और का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है, उसमें कोई इनकम बनती है उसमें से? एनी अपॉर्चुनिटी ऑन दैट साइड, O&M अपॉर्चुनिटी? नॉर्मली हमारे प्रोडक्ट में 12 मंथ्स की वारंटी होती है और जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और सेकेंडरी जो आपने बताया कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू हम उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं, मगर जो हमारा सर्विस नेटवर्क है और हमारा जो बिजनेस है
उसी को हमें हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 12 महीने का जो वारंटी पीरियड है हमें उसको अच्छा सर्विस देना है। तो अभी नेटवर्क और लिमिटेशंस की वजह से, लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ मैन पावर कंट्रोल, तो वो वजह से हम उतना एएमसी में फोकस रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करते। मगर हमारे जो ऑल इंडिया बेस्ड ओईएम और डीलर है और जो हमारे टेक्नीशियन है वो ऑल इंडिया कैटर करते हैं, और हमारे जो डीलर एसोसिएट है उसको साथ भी हम उसको एक प्रायोरिटी देते हैं कि वो उसी से कनेक्टेड रहे फॉर दी सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू। अप्रिशिएट, बट इट वाज एडवाइस जस्ट के हमें एएमसी पे फोकस करना चाहिए। वो हमारी ब्रांड भी इम्प्रूव कर सकती है, ब्रांड वैल्यू और मार्जिन भी उसमें अच्छा रहता है। ओनली दिस माय सजेशन। No, definitely your suggestion is very acceptable and we also focus on that. ऐसा नहीं है कि हम एएमसी को फोकस नहीं करते, मगर जहाँ हमारी जैसे गुजरात है और वेस्ट जोन है, साउथ में हमारा चेन्नई बेस्ड यूनिट है, तो वहाँ से हम डेफिनेटली उसको सर्विस के साथ एएमसी के लिए फोकस कर रहे हैं। और ये आपका सजेशन हम उसको ध्यान में रख के आगे भी कुछ प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारी सब्सिडियरी भारत रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो किसके लिए और उसमें क्या करते हैं हम? Bharat Refrigeration is a wholly subsidiary company of IceMake and similar product range is there, but स्केल बहुत छोटा है, तो कई सारी प्रोडक्ट जो है हम सदर्न स्टेट से वहीं से थोड़ी कैटर करते हैं और आइसमेक को भी थोड़ा उसका सपोर्ट मिलता है। मगर यहाँ जो आइसमेक में जो प्रोडक्ट रेंज है उससे थोड़ी कम रेंज है, मगर डेफिनेटली इट्स सिमिलर लाइन। रेफ्रिजरेशन में हम कोल्ड स्टोरेज है, चिलिंग प्लांट है, जैसे बल्किंग चिलर है, रेफर वन है, और कई सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है यानी कॉमर्शियल में जो होते हैं मिल्क प्लांट, सॉरी डेयरी प्लांट और आइसक्रीम प्लांट, वो सबको हम वहीं से कैटर कर सकते हैं। थैंक यू सर, गुड लक टू यू। थैंक यू। Thank you. Reminder to the participants, please press star and 1 to ask a question on your touchtone phone. The next question is from the line of Rajiv Bagla from Eurotrade Support Services. Please go ahead. नमस्ते चंद्रकांत जी, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर अ गुड परफॉर्मेंस। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी के लिए थोड़ा सा स्वॉट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को थोड़ा समराइज करके सबके लिए बता सकेंगे तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मुझे आपकी कंपनी में अट्रैक्टिव इंटरेस्ट लगता है एंड आई सी multi-fold growth opportunity and but I'm failing to understand that ये मतलब बहुत स्लो और धीमे से और बहुत मतलब टाइम क्यों ले रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा स्वॉट बता सकेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर सकेंगे। उद्देश्य मेरा इसको देखने के लिए है कि हाउ यू कैन गो ऑन व्हाट आर द फर्दर ग्रोथ स्ट्रेटजीज। मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम growth market strategist and with global business experiences and planning, logistics, supply chain. So I wish to see synergies and explore that growth opportunities with you. हेलो जी, हेलो हेलो। हाँ, एक्चुअली लिमिटेशन ऐसा है, ये प्रोडक्ट सप्लाई के बाद में सर्विस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग है, तो हम वो नंबर्स में करके जैसा डोमेस्टिक या वाइड गुड्स की तरह नहीं बेच सकते हैं। थोड़ा सा सीजनल पहले था, अब सीजनल नहीं बोल सकते हैं, और प्राइस वोलेटिलिटी है। इंडस्ट्री छोटी है, इसीलिए स्किल मैन पावर की एक शॉर्टेज होती है, और ये लिमिटेशन है। अपॉर्चुनिटी में तो एक्चुअली मार्केट ओपन ही अभी हुआ है। रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज, अगर आप और कंपनी की भी स्क्रिप्ट सुनेंगे तो सबका यही बोलना है कि अगले सालों में हम जो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन या हमारा कोर प्रोडक्ट है उसमें 20-22% का CAGR मार्केट ग्रोथ है, और हम लोग और कंपेरेटिवली लोगों और प्लेयर के कंपैरिजन में हम लोग और अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। जी, एंड चैलेंज क्या दिखते हैं पटेल सर?
हेलो, आवाज आ रही है पटेल साहब? चैलेंज क्या दिख रहे हैं आपको? कीप कनेक्टेड। चैलेंज क्या दिख रहा है पटेल साहब? आप इसको कनेक्ट कर दो। Ladies and gentlemen, please stay connected while we are trying to connect with the management. Rajiv, जी please go ahead with your question. जी पटेल साहब, हमें चैलेंजेस क्या दिख रहे हैं जिन्हें आप टारगेट रख के सॉल्व करने के प्रयास में हैं? एक्चुअली चैलेंजेस तो देखो, हम लोग हमारा टारगेट भी तो 25-30% टॉप लाइन ग्रोथ का है और वो हम ऐसे अचीव कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। वेरी गुड। अगला मेरा जवाब आप सुना या नहीं? स्किल, मैन पावर, सप्लाई के बाद में साइट पे भी इंस्टॉलेशन कमीशनिंग होता है, प्राइस वॉलेटिलिटी है, इंडस्ट्री छोटी है इसीलिए बिजनेस सर्टेनिटी नहीं है कि आप कंसिस्टेंट इतने प्रोडक्शन कैपेसिटी आप डिजाइन करके आप मार्केट कैप्चर कर पाते हैं। ओवरऑल ज्यादा कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन बिजनेस सप्लाई के बाद की जो लायबिलिटीज है उसको देख के आप जब तक वो सेटअप और उस नेटवर्क को ठीक नहीं करेंगे तो अब सप्लाई के बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। ये थोड़ा सा चैलेंज बोले या तो लिमिटेशन यही है। तो मतलब इसको हम ऐसा पूछना चाहूंगा कि आप मार्केटिंग में सफिशिएंट है, एग्जीक्यूशन शॉर्ट हो रहा है, या एग्जीक्यूशन सफिशिएंट है, मार्केटिंग शॉर्ट हो रहा है? एजुकेशन में ऐसा है ना कि आप आपके एम्प्लॉय से तो पूरा लायबिलिटीज नहीं कर सकते। आपको ऐसे वेंडर डेवलप करने हैं, लोगों को ट्रेन करना होता है, तो बोल सकते हैं कि मार्केटिंग सफिशिएंट है, लेकिन सीजनल समय टाइम में प्रोडक्शन शॉर्टेज होता है। और एजुकेशन के लिए कोई रिमोट एरिया जैसा हम लोग नॉर्थ ईस्ट देखे या तो साउथ ईस्ट के जो हमारे कुछ स्टेट है जहाँ अभी ही स्केल हुआ है, इसी वजह से वहाँ हमारे जो पार्टनर है, लोकल पार्टनर, जिससे हम लोग इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और सर्विस सपोर्ट लेते हैं। तो ये नेटवर्क होने के बाद हम लोग जो हमारे लिए रिमोट एरिया है, तो नॉर्थ स्टेट है जो हिमाचल, जम्मू या तो उत्तराखंड, जहाँ हमारे लिए अभी नया शुरुआत है मार्केटिंग का। ओके, और हम अपना यूनिकनेस या स्ट्रेंथ क्या समझते हैं कि भाई दिस इज आवर यूएसपी? एक्चुअली हम लोग कोल्ड रूम मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। आज भी हमारे इंडिया के जो हमारे से बड़े प्लेयर के सामने कई जगह पर हमें प्रीमियम से प्राइस के साथ हम ऑर्डर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कोल्ड रूम के एक्सपर्ट है। हल्का थोड़ा सा कस्टमाइजेशन है, हम लोग कर सकते हैं, बेटर सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ है। दूसरा, हमारी प्रोडक्ट बास्केट काफी बड़ी है। कोई फूड इंडस्ट्री है, होटल, रेस्टोरेंट, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर पैक हाउस है, तो हम लोग इनके रिटेल आउटलेट, उनका लॉजिस्टिक के लिए रिफर व्हीकल है, उनकी कोल्ड चेन नेटवर्क में जो डिस्ट्रीब्यूशन में कोल्ड रूम है वो देते हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट है वो देते हैं। ये बास्केट जो मल्टी प्रोडक्ट बास्केट, ये हमारा एक स्ट्रेंथ है। लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनको कैसे सॉल्यूशन दिया जाए, ये भी हमारा एक स्ट्रेंथ है। अच्छा, तो इसमें से क्या आप अपने टॉप 3 प्रोडक्ट बोल सकते हैं विच आर द मेजर हॉट केक सेलिंग? अभी मैं समझ नहीं पाया आपकी क्वेश्चन को। आपके प्रोडक्ट बास्केट में क्या ऐसे 3 या 5 प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड हैं जो हॉट केक मतलब हर किसी को वो बिल्कुल देखते के साथ पसंद आ जाता है, हॉट केक सेलिंग प्रोडक्ट?
कोल्ड रूम है वो हमारा हॉट केक प्रोडक्ट है और हमारे भी टॉप लाइन का 50% से ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन वो प्रोडक्ट से आता है। कई सारी कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो हमारा यूनिक प्रोडक्ट है। मीडियम साइज के आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर को हम लोग एक अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। मीडियम डेयरी प्रोसेसिंग, आप कई सारे गुजरात के जो मिस्टर सोडी है अमूल के जो एमडी है उसने भी बोला कि ऑर्गेनाइज मिल्क का सेक्टर ग्रो हो रहा है और डेयरी में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो डिमांड बढ़ रहा है। तो हम लोग अभी मीडियम साइज डेयरी जिनको बोलते हैं 20 लाख से 50 लाख का टिकट साइज की डेयरी जो प्रोसेसिंग देते हैं, प्रोसेसिंग में हमारे हर एक बास्केट के लिए वो बिजनेस लेके आता है। तो ये हम लोग हमारा एक स्ट्रेंथ है और वो हॉट केक प्रोडक्ट है। भले ही अभी उसका मार्केट इतना बड़ा नहीं बोल सकते। इनके अलावा हम लोग रेफ्रिजरेशन व्हीकल करते हैं जिसमें हम लोग हमारी और इंसुलेशन एक्सपर्टीज की वजह से वो प्रोडक्ट भी हम बेटर तरह से मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग रीजनल प्लेयर को साथ में रखते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है गुजरात में कोई कोलकाता से व्हीकल देगा नहीं। तो हम लोग उन्हें कोलकाता में एक हमारा एक पार्टनर है जो जॉइंट ब्रांड में वो प्रोडक्ट सेल करेगा। जैसे वैजाग में भी है, केरला में भी है, दिल्ली में भी है। तो ये सब हॉट केक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इंडियन मार्केट में सही में रेफ्रिजरेशन की जो अवेयरनेस बोले या तो उसकी एक्सेप्टेंस या उनको कंपल्सन समझने की एक माइंडसेट अभी है नहीं, लेकिन आने वाले समय में लगता है कि ये और बेटर होगा। जी, और ये मेजर मेट्रोज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों पांचों जगह आप शायद हैं, करेक्ट? ऐसे तो हम लोग 4-5 जगह नहीं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट कैपिटल है जहाँ पर हमारा जो वहाँ हमारे सेल्स और सर्विस के लोग हर जगह। मेनली मेट्रोज पूछा, मेट्रो क्योंकि डेंसिटी बहुत है तो कंजम्पशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं, इसलिए मेट्रोज पूछा स्पेशली। नहीं, मेट्रो में तो है ही हम लोग। मेट्रो में हर जगह पर हमारे सेल्स के 2 लोग हैं, सर्विस के 2 से ज्यादा लोग हैं। बेहतर बेहतर। एंड सप्लाई चेन में आप खुद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सप्लाई चेन एफिशिएंसी में? एक मतलब इन जनरल स्टैंडर्ड, मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल इंडियन एक अच्छे एवरेज कंपनी में से खुद को कितने नंबर देना चाहेंगे सप्लाई चेन एफिशिएंसी में? देखो, मेरे को मार्क देना बोलेंगे तो मैं तो 10 से 10 दे दूंगा, लेकिन अगर मैं कहीं बाहर रह के बात करता हूँ तो 7 to 9 के बीच में तो हमें नंबर हम दे सकते हैं हमारे अपने आइसमैक को, इतना स्कोर। हाँ नहीं, डेफिनेटली बेहतर है क्योंकि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, उसकी तो लिमिट नहीं है, बट 7 to 9 इज ऑल्सो रीजनेबली वेरी गुड। थैंक यू पटेल सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Mr. Sagar Shah from Phillip Capital. Please go ahead. Good evening, sir. Good evening. Hello. Yeah. So, मेरा पहला question ये था, my first question was in this, if you see in this quarter's performance, we have clocked the almost highest EBITDA margins if you compare in the last 6-7 quarters actually. So my first question कि उस ये quarter में कोई one off था? Was there a change in the segment? वैसे क्वार्टर टू क्वार्टर हम मार्जिन को कंपेयर करें वैसा हमारा बिजनेस है नहीं, पर जैसे कोई एक वर्टिकल है, जैसे अमोनिया का डिस्पैच कोई एक वर्टिकल में ज़्यादा होगा तो उस क्वार्टर में थोड़े से मार्जिन कॉम्प्रेस रहेंगे। हमने जैसे बोला था, हमने प्राइस रिवीजन भी किया था, तो हमने जो पिछला प्राइस रिवीजन किया था उसका इम्पैक्ट भी एक आध क्वार्टर में आता है। और ऐसा है कि क्वार्टर 4 में हमारा बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा था और उसमें कॉमर्शियल वाला जो सेगमेंट है उसका भी बिजनेस काफ़ी बढ़िया था। तो जो हमारे 5 वर्टिकल है उसमें से जो मार्जिन वाले सेगमेंट होंगे उसमें उसका डिस्पैच ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमारे मार्जिन थोड़े से बेटर शो करेंगे। नो अदर रीजन। ओके, श्योर। तो देन कैन यू एटलीस्ट क्लासिफाई ये जो आपके 5 सेगमेंट्स हैं उसमें इंडिविजुअल किस में एटलीस्ट बेटर मार्जिन है, किस में कम मार्जिन है? हाँ, फर्स्ट
हमारा जो कॉमर्शियल वर्टिकल है वो हमारा सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है। उसमें हम ग्रॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस मार्जिन विदाउट लेबर। जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन की बात करें उसी के हिसाब से मैं बताता हूँ। ये आप कोल्ड रूम एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, राइट? कॉमर्शियल वर्टिकल यानी जिसमें डीप फ्रीजर और डेयरी मशीनरीज आता है। कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन। यस, कॉमर्शियल फर्स्ट पे आता है जिसमें हम 30 से लेकर 34% का मार्जिन रेंज हमारी रहती है। सेकंड नंबर पे आता है कोल्ड रूम में 28 से लेकर 32% के बीच का मार्जिन हमारा रहता है। थर्ड नंबर पे इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, जो चिलर और IBT जिसमें फॉल होता है, उसका भी नियर अबाउट कोल्ड रूम 28 से लेकर 31% का। और उसके बाद में ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन आता है जिसमें 15 to 19% के रेंज का हम ग्रॉस मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एमोनिया वर्टिकल है जो टन की सॉल्यूशन है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 10% के आसपास का मार्जिन हमारा रहता है। Okay. So basically, going ahead, as sir ने कहा था in his opening remarks कि around 50 crore का I think आपका ऑर्डर बुक है, right? तो उसमें से can you state ये 5 segments में से क्या क्या proportion है आपके ऑर्डर बुक का? कोल्ड रूम का हमारा मैक्सिमम है अराउंड 19 करोड़, 18.71 करोड़ की पेंडिंग ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूशन कोल्ड रूम का है। फिर सेकंड पे आता है कमर्शियल, 13.67 करोड़ है उसका। उसके बाद में अमोनिया का है 9.65 करोड़। Okay, so the first is cold room, the second आपने कहा कमर्शियल, यस, उसका कितना है? 13 crores and half. Okay, and the third one is ammonia. अमोनिया है 9.65. Okay. So going ahead, I think you have given the margin of around 8 to 9% of EBITDA. So आपको लगता है in the next 2 years will we be able to sustain this EBITDA in the next 2 years? 8-9% का EBITDA हम मेंटेन कर पाएंगे, वैसा हमारा प्लानिंग। On a consolidated basis, right? On a consolidated, सभी प्रोडक्ट। Okay. And basically, ये जो as your capacity utilization is 67%, and as sir said, there is huge demand, especially in the dairy space, and maybe due to awareness, the demand for the product is increasing. So for the next 2 years, do you think that without capex you will be able to double your revenues? हमारा 300 करोड़ का टॉप लाइन हम मे बी नेक्स्ट ईयर, अभी जो हमारा है उसमें हमने 25 मतलब 250 करोड़ या उससे प्लस का तो हमने टारगेट इस साल रखा ही है। और अभी के मुताबिक हमें लगता है कि भी उसके करीब हमारा प्लान पहुंच जाएगा। इसलिए हम अपना कैपेक्स भी अभी एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं, तो हमें लगता है वो मे बी नेक्स्ट करीब आ जाएंगे। So basically 250 crores of revenues you are targeting in FY23, ना? 22-23. Okay. And going ahead जो आप capex plan कर रहे हैं around I think 25 crore का capex आप जो plan कर रहे हैं, so basically वो I think वो declare करेंगे, वो commission होगा तो I think 24 months I think लग जाएंगे। तो तब तक at least you are eyeing at least a 20-25% growth in revenue each and every year, right? Till the new capacity is commissioned. नया कैपेक्स जो है वो जब भी हमारा डिसीजन होगा तो 1 साल में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्टिव हो सकता है। फर्स्ट ईयर में शायद इतना ज़्यादा टॉप लाइन में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन का टाइम नहीं लगता है हमारी ये प्रोडक्ट। ओके, और मेरा लास्ट क्वेश्चन था सर, इन योर प्रोडक्ट्स बेसिकली एनी पर्टिकुलर ज्योग्राफीज यू आर टारगेटिंग कि मतलब ये ज्योग्राफी में हमने अभी तक फोकस नहीं किया है, आगे जाके फोकस करेंगे अंदर तो? हाँ, वो बात आप जो बता रहे हैं, हम पर्टिकुलर कुछ जियोग्राफी में हमारा बिजनेस पहले से नहीं था। हम लोग वेस्ट में हमारा टोटल टॉप लाइन का 60% बिजनेस है, 67% रहा करता था।
हम लोग नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा फोकस करते हैं, नॉर्थ भी है हमारे फोकस में, साउथ में तो है ही, हम लोग वेस्ट पहले से लोकल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग। तो साउथ का कितना है सर परसेंटेज? अगर 60% वेस्ट का है तो व्हाट परसेंटेज इज साउथ? साउथ का 10.35%। 10.35%। भारत में ये 10.35 आइस में का है। भारत में भी हमने 14 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है जो हमारी होली ऑन सब्सिडरी है और वो चेन्नई बेस्ड है, उसका हमने अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो साउथ में और वेस्ट में हम लोकल है, तो लोकल होने की वजह से वहाँ की जियोग्राफिकल की जो भी डिमांड है वो हम कैटर कर पाएंगे। इस साइड में अभी हम जियोग्राफिकली एक्सपांड करने का अभी हम प्लान कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड का। Okay, great sir, great. So basically, okay, so going ahead, आपका साउथ में सॉरी नॉर्थ में पेनिट्रेशन रहेगा as per you are targeting to. Okay, okay. Thank you sir, thank you so much. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Rashmikant Shah, a retail investor. Please go ahead. Congratulations, Chandrakant bhai, for giving a good result, and it's also reflected in the stock price. Thank you for that. My question is this 2 months जो गए अभी अप्रैल एंड मई, तो आप बताएंगे कितना रेवेन्यू इनकम है अभी आपने 2 महीने में? ये 2 महीने की टॉप लाइन की बात कर रहे हो, राइट? हाँ, या 2 महीने में कितना रेवेन्यू हुआ है, जनरेट किया है कंपनी? हमने अभी वैसे 40 करोड़ का हमारा टॉप लाइन 2 महीने में हो चुका है, 20 करोड़ प्लस ही। 20 crore plus. Okay. And sir, what is the dividend you declared? I think nothing it is shown then anywhere. So what is the dividend you declared? Any dividend you declared? Yes, we have declared 12%, 1.2 rupees per share. Oh, as per last, no? As per last. हाँ, as per last. Yes, yes. Okay, thank you, sir. Okay, okay. Thank you. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touch-tone phone. The next question is from the line of Rajiv Bagla from Euro Trade Support Services. Please go ahead. चंद्रकांत भाई, आप राजीव अगेन, आपने बीच में भी कुछ जिक्र किया था कीनिया, ईस्ट अफ्रीकन मार्केट, स्पेशली कीनिया। थोड़ा आवाज व्यवस्थित समझ में नहीं आने से मैं आपको रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप बताएंगे ईस्ट अफ्रीका के लिए क्या है आपका स्ट्रैटेजी? ईस्ट अफ्रीका के लिए एक्चुअली अफ्रीका में ईस्ट की जो कंट्री है वही हमारे पास में है। केन्या नायरोबी में हमारे 2 एसोसिएट भी है जो हमारे से रेफ्रिजरेशन यूनिट जो कोल्ड रूम का एक पार्ट होता है वो लोकल मार्केट में अपने बिजनेस में बेचते हैं। इसके अलावा युगांडा में है हम लोग, केन्या में और युगांडा में आप भी जानते हैं गुजराती लोग ज़्यादा वहाँ डेयरी और फूड इंडस्ट्रीज में है। हम लोग एक साइज होने के बाद वहाँ हमारा एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए सोच रहे। अगले कुछ टाइम के बाद एक और एग्जीबिशन आ रहा है। 4 साल पहले भी हमने केन्या नैरोबी में एग्जीबिशन पार्टिसिपेट किया था, तो हम एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करेंगे। थोड़े से यहाँ के जो एम्बेसी है, जो बिजनेस ट्रेड ऑफिसर होते हैं, उनको मिलने का एक प्लान किया। तो एक्सपोर्ट में राजीव जी हम लोग ऐसा है कि अभी डोमेस्टिक मार्केट भी इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, यहाँ सही मार्जिन भी मिल रहा है और एक्सपोर्ट में ऐसा कोई स्पेशल प्राइस प्रीमियम नहीं है जो जिसको हम लोग बोले कि वो प्रॉफिट अच्छा है इसलिए वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए। इसलिए हम लोग स्लोली हमारा प्रेजेंट बना रहे हैं, हमारी टीम को एक एक्सपीरियंस दे रहे कि एक्सपोर्ट में फोकस करें और अच्छा रेवेन्यू चाहिए तो हम कर पाए। जी, समझा। नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि मार्केट स्प्रेड, जोग्राफिकल स्प्रेड इज इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजी। बहुत बेहतर, धन्यवाद पटेल साहब। Thank you.
As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to the management for closing comments. Before we close the session, on behalf of Ice Make Board of Directors and Management, I'd like to thank you all for your participation in earnings Concall. Thank you for listening and have a great time ahead. Thank you. Thank you. On behalf of Ice Make Refrigeration Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.